Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we'll discuss about the Microsoft Excel. Microsoft Excel is a very important topic of the computer, and the most of the MCQs come from the Microsoft Excel in the various exams of your like CGL, SSC, and other the banking exams. Microsoft Excel computer गोटे बहुत important जिनस एवं ए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो एमसीक्यू गुडाक प्राय तो तमरो एग्जाम रो क्वेश्चन मानकरे आस्ते सीजीएल एग्जाम हो बा एसएससी हो बा बैंकिंग एग्जाम गुडाक हो तो बर्तमान आमे आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो किछि ओवरऑल जिनस भी डिस्कशन करिबा तापरे आमे एमसीक्यू गुडाक डिस्कशन करिबा तो बाय द वे बर्तमान मु तुमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो देखौछि स्क्रीन ता देखो This Microsoft Excel or MS Excel is an spreadsheet application software that is developed by the Microsoft Corporation. ये जो Microsoft Excel तमे कहूचो बा MS Excel कहूचो एटा को Microsoft कंपनी डेवलपमेंट करिछि जोटा जोटे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Generally आमे स्प्रेडशीट कहूचे. Spreadsheet is a table of values arranged in rows and columns. स्प्रेडशीट होच गोटे भली टेबल भली जिंस काहे कि हमें ऑब्वियसली देखुचे एथरे अनेक गुडाए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड्स गुडा को पडिछि बा एटा गोटे जाली भली देखाउछि ग्रिड्स मींस जाली एटा गोटे जाली भलिया ही देखा जाउछि ताले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल is a table of values arranged in rows and columns. That is the feature of the basic feature of the spreadsheet. तो स्प्रेडशीट माने गोटे टेबल भली जिंस जोथरे कि वैल्यू गुडा आमे रो आ कॉलम रे एंटर करू each value can have a predefined relationship with other value. If we change one value in a data range, then its related values will also change. जदि गोटे डाटा रेंज रु आमे कोनोस गोटे वैल्यू को चेंज भी करू तार रिलेटेड वैल्यू मध्ये चेंज हिजे. एज एग्जांपल मने करो एठी आमे किछि वैल्यू गुडा को नैचे सपोज मने करो मु एठी किछि डाटा एंट्री करूची लाइक दैट एठी मने करो मते एंट्री करबा को पडिला कोनटा ना तमरो डिफरेंट वैल्यू गुडा को जेमति की 45 देन आफ्टर 67 देन आफ्टर 89 एंड मते एठी तार सम को बाहर करिवार अछि तो बाय द वे मते एठी ऑटो सम रो यूज करली एंड तार वैल्यू को मु कैलकुलेशन करली. If we change one value in a data range, जदि गोटे डाटा रेंज रो हमें गोटे वैल्यू को चेंज कर दोउचे सपोज एटा को मु कर दोउची 50 then its related values means the sum is affected also ताले ए जो सम जो मोरो इथि कैलकुलेशन आइथिला से मध्य अफेक्टेड हे जाउची. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज दैट लाइक ऑफ एप्लीकेशन. If we change one value in a data range then its related values will also change. जदि गोटे वैल्यू को हमें गोटे डाटा रेंज भितरु कैलकुलेशन करूचे ताकू नै कि कैलकुलेशन आइथिबा बा तार सहित रिलेटेड थिबा वैल्यू मध्य एथिरे अफेक्टेड होउची बा चेंज होउची. ताले ए जो एक्सेल रो इंटरफेस हमें देखुचे एक्सेल रो इंटरफेस से फास्ट कोड कोन से रेडी बुझी दबा तो एटा जो फास्ट देखुचो होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला दैट आर नोन एज द टैब्स एंड जोति कोनोसी गोटे टैब रे हमें क्लिक करूचे लाइक दैट होम रे हमें क्लिक करूचे बाय द वे एठी जो जिंस आछी एटा कोचे हमें रिबन एंड रिबन भितरे प्रतिटी रिबन भितरे गोटे गोटे ग्रुप थाए जेमति कि होम डॉट टैब होम रो एटा रिबन एठी होची हमर कीबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर स्टाइल्स सेल्स एडिटिंग एगुडा गोटे गोटे ग्रुप बोली पाइछे एंड ए जो 1 2 3 4 हमें कहूचे दैट आर नोन एज द रो नंबर्स इन रो हेडर एंड ए बी सी डी लाइक दैट थिंग्स दीज आर नोन एज द कॉलम लेटर्स इन कॉलम हेडर एगुडा को कॉलम लेटर्स इन कॉलम हेडर बोली कहजे एंड ए जो हमें रो आ कॉलम रे इंटरसेक्ट जगहडा देखुचे याकू गोटे गोटे सेल बोली कहजे एंड ए जो सेल रे हमें देखुचे ए तापरे तळे एटा देखुचे एटा कहता हमें सीट टैब बोली कहताउ एंड एठी हमर स्क्रॉल बार अछि एटा कुछ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड बाय द वे एठी जो साइड रे अछि एटा कोन वर्टिकल स्क्रॉल बार ताले एही प्रकार सब जिंस गुडा को नै कि मुख्यतः हमर एक्सेल रो एप्लीकेशन रो तयारी अछि एंड हमें कोन करिबा ना वर्तमान जानिबा जे ए जो गारो गुडा को कोन अनलिमिटेड की ना किछ ओडे लिमिटेशन थाए ताले ए जो हमें गारो पडिबा द्वारा अनेक गुडा रो आ कॉलम तयारी होछि तो एज द रूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रे हमें 10,48,576 टा धाडी पाई थाउ एंड 16,384 पर्यंत कॉलम पाई थाउ ताले
ऑब्वियसली रो गुडा तो 1 2 3 4 एक 10 लाख 48,576 पर्यंत जाइथिबो नो डाउट एंड कॉलम गुडा को जो हमर थाए से गुडा को हमर एबीसीडी फॉर्मेट रे जाइथिबो जहां पर कि ए थरु जेड पर्यंत 26 देन ए रु आरंभ करी कि ए जेड लाइक दैट ए जेड जेड पर्यंत पुनी ट्रिपल ए रु आरंभ करी कि लास्ट टा एक्स एफ डी पर्यंत थाए तो जदी टोटली हम एमती प्रोसीजर रे कैलकुलेशन करिबा तो सेठी हमकु 10,48,576 रो एवं 16,384 कलम हमको मिल पार जहाँ भी हो बर्तमान आम जो वर्कशीट रे बर्तमान देखा कैलकुलेशन करिकी किछि देखिले जोटा सम कैलकुलेशन करिकी एंड एक्सेल रो किछि गोटा इंपोर्टेंट फीचर गुडाक अछि जेमति कि आमे कहिथौ डाटा वैलिडेशन हमर कंडीशनल फॉर्मेटिंग देन आफ्टर which फिल्टर देन सिनेरियो आफ्टर दैट पाइवट टेबल नेक्स्ट तमर फार्मूला फंक्शंस then तमरो होची गोल सिक तो these are the various features of the excel जहाँ कि हमें विभिन्न समय रे ताको टॉपिक कारण एक्सेल टा जोटे भास्ट टॉपिक ताको समय अनुसार केबे केबे हमें कवर करिवा एंड ए जो एक्सेल रो बेसिकली इंपोर्टेंट जोडा को मु जो टॉपिक गुडा कहली गोल सिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा वैलिडेशन पाइवट टेबल एंड तमरो जोडा रहला सिनेरियोज फार्मूला फंक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग these things are the very important things. Highlight these points as that the important topics of the excel. These are topics as your first thing there are various things like your data validation. Highlighting these points, there are data validation, next thing is your conditional formatting, next is your pivot table, next is your goal seek, next is your like your data validation, conditional formatting, pivot table, goal seek, scenarios, next is your filter, and like that. These type of things are very important things. Data validation, conditional formatting, pivot table, goal seek, scenario, filter, and just like thing. Data validation that prevents the user from entering inaccurate data inside a worksheet. आमे जोटी जहा एक्सेल रे एंट्री भी करि दो सेल रे एंट्री ही जाय किंतु बेले बेले हमको एमिति करिवा को पड़े निर्दिष्ट गोटे सेल रे निर्दिष्ट प्रकार वैल्यू आमे देई परिबा आमे जदी सेही जगह रे जहा वैलिड दिया जायथिबो जहा वैलिडेशन रूल रे दिया जायथिबो ता छडा अन्य जदी किछि डाटा भी एंट्री करिवा सेटा से एक्सेप्ट करि परिबो नाही सो दैट थिंग इज नोन एज द डाटा वैलिडेशन एन इंपोर्टेंट फीचर देन आफ्टर कंडीशनल फॉर्मेटिंग माने हमें समस्त जानि छे डिजाइनिंग different color scheme apply करिबा different font designing apply करिबा that is known as formatting so exactly cell रे entry किबा value गुडा को हमर condition अनुसार हमें किछि formatting करिबा बा designing करिबा so conditional formatting is that feature of excel that can formatting values in a apply the predefined color schemes and also font styles according to a condition you specify जो अनुसार condition बा शर्त दबा सेही अनुसार से formatting करिवो and pivot table is an interactive table that lets to analyze large size of data जदि हमर बहुत गुडे डाटा अछि ताको एनालिसिस करिबा कोले हमको पाइवट टेबल रो दरकार पड़िबो ताले पाइवट टेबल रे हमें कोन करू यू कैन रोटेट इट्स रोज एंड कॉलम्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट अनुसार रो रे थिबा धाडी रे थिबा डाटा गुडा को स्तंभ को कन्वर्ट करि परिबो एंड स्तंभ रे थिबा डाटा गुडा को धाडी को कन्वर्ट करि परिबो टू फाइंड आउट डिफरेंट समरीज and to compare the related items so at that time pivot table is very important then after goal seek adjust a value in a specified cell until a formula that is dependent on that cell reaches at the target value ताले गोटे सेल रे थिबा वैल्यू को हमें एडजस्टमेंट करि परिबा
बा हमरो रिक्वायरमेंट अनुसार एडजस्टमेंट करि परिबा जेतळे आमे कोनोसी टार्गेट वैल्यू से जो जहा गोटे सेल रे वैल्यू थिबो डिपेंडेंट थिबो से वैल्यू को आमे चेंज करबा को चाहूचे ताले सेटा गोल सीक माध्यम रे आमे चेंज करि परिबा देन असला सिनेरियो इज एन डिफरेंट थिंग दैट फाइंड आउट द समरी और दैट फाइंड आउट द व्हाट चेंजिंग और सिनेरियो आमे कहनो सिनेरियो चेंज करबा ताले आमे गोटे किछि चेंजिंग करिके देखिबा को चाहूचे एंटर डाटा ऊपर किछि चेंजिंग करके देखिबा को चाहूचे as that scenario is in that field is very much required then after filter माने generally हम जानि जे छानिबा तो exactly like that गोटे कंडीशन अनुसार आमे सेही स्पेसिफिकली डाटा गुडा को डिस्प्ले करिबा एंड टेम्पररीली जोटा कंडीशन रो फुलफिलमेंट करू नथिबो ताका हाइडिंग कर देबा आज एग्जांपल मते बहुत गुडा डाटा एंट्री करा आइछि जेमति के एम्प्लॉय नेम रो मते पर्टिकुलरली एस लेटर रे नाम थिबा एम्प्लॉय मान को डाटा गुडा को देखिबार अछि अन्य मान को देखिबार नाही तो बाय द वे टेम्पररीली मु हाइडिंग कर देई परिबी डाटा गुडा को अन्य गुडा को एंड केवल एस लेटर थिबा नाम गुडा को देखि परिबी बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर सो एक्सेल रो एगुडा को बहुत इंपोर्टेंट जिंस कहंती या व्यतीत आहुरी दुईटा जिंस रहि गला जेमति कि तमरो गोटे कहंती फॉर्मूला एंड अनदर थिंग जोटा तमरो रहउची फंक्शन जदि ओवरऑली एक्सेल रो तमे एई सब जिंसोडा को ओवरऑल टिके बुझी पारुछ देन तम पई एटा होची बहुत इजी जिवो ताले फार्मूला माने कोन फार्मूला मींस दिस आर द प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस ऑलरेडी कैलकुलेशन गुडा को हेई कि थाए एंड ऑलरेडी गिवन नेम्स टू इजी यूज ऑलरेडी कोन सोडे फंक्शन रो नाम दिया है कि भी थाए जहा को हमें सहज रे व्यवहार करि परिबा जेमि हमको किछि जिंस को एडिशन करिवार अछि तो बाय द वे से जो एडिशन करिवार अछि तार गोटे कैलकुलेशन हे जाइछि एंड गोटे नाम दिया है कि स्टोर हे कि रखाइ छि सेटा कहंदी सम तो एटा होची फार्मूला होची इजीली व्यवहार करिबा पई कोन सोडे फंक्शन को जहा कि सॉरी फंक्शन एटा कहंती जहा कि हमें इजीली व्यवहार करिबा एंड फार्मूला जोटा तमे कहउछ फार्मूला माने सेटा तुमको मैनुअली लिखिबा को पड़िबो जेमति कि तुमको एई सेल गुडा को मिसेइबार अछि कि एई सेल रो एटा को फेडीबार अछि तो मैनुअली से जो कैलकुलेशन को लिखिबा को पड़िबो ताले प्री डिफाइंड कैलकुलेशन गुडा को ऑलरेडी जोटा ना दिया है कि स्टोर हे कि अछि सेटा को हमें फंक्शन बोली कहू एंड जो गुडा को मैनुअली हमको करबा को पड़े ताले सेटा को हमें फार्मूला बोली कहिताउ ताले फार्मूला और फंक्शन भीतर सबुठारु बड़ डिफरेंस हला फार्मूला इज मैनुअली कैलकुलेटेड ऑन ए सेल बट फंक्शंस आर प्री-डिफाइंड कैलकुलेशंस ऑलरेडी गिवन नेम दैट कैन बी इजीली यूज्ड ताकू सिंपली खाली क्लिक करके हमें यूज करि परिबा आ सबुठारु बड़ रूल हला ऑल फार्मूलाज और फंक्शंस मस्ट बी बिगिन विथ एन इक्वल टू साइन प्रत्येक फार्मूला एवं फंक्शन एक्सेल निश्चित भाबे गोटे इक्वल टू साइन बा समान चिन्ह रु आरंभ होइथाय विदाउट इक्वल टू साइन द एंट्री इज इंटरप्रेटेड एज रेगुलर डाटा एज टेक्स्ट और नंबर्स जदि कोनोसी फार्मूला बा फंक्शन रो आरंभ रु आमे समान चिन्ह रु आरंभ करी नाहे ताहले सेटा को से गोटे नॉर्मली लेखा बा लेटर एमति लेखा जाईची बा कोनोसी नंबर लेखा जाईची बा नंबर सहित लेटर एमति मिसी के लेखा जाईची बोली से धरि दिए तो बाय द वे हमको एई जो बेसिकली 5-7टा जिंस एक्सेल रे कहली ता पर टिके अधिक फोकसिंग करबा को पड़िबो एबे एक्सेल रो ओवरऑल त मु किछि तुमको डिस्कशन करि सरलानी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मु एमते मजरे भी केबे केबे आउ किछि अन्य टॉपिक ऊपर डिस्कशन भी करिबी तो एबे हमें किछि एक्सेल रो एमसीक्यू विषय डिस्कशन करिबा ताले ओवरऑल मु तुमको कहली एक्सेल होउछ गोटे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलपमेंट करा जाईछि एक्सेल रे आमे तळे देखुचे एक्सेल रो फाइल को बा एक्सेल रो जोथे आमे फाइल मूल जिंस कहिताउ सेटा को गोटे वर्कबुक बोली कहिताउ एक्सेल रो जहा धेर आमे काम करू ताको गोटे गोटे वर्कशीट बोली कहिताउ एंड बाय द डिफॉल्ट एक्सेल रे हमरो 2-3टा पर्यंत वर्कशीट देखा जाइते शीट 1 शीट 2 शीट 3 नुवा वर्जन रे भी गोटी शीट केवल आछि शीट 1 एवं प्रत्येक शीट रे हमरो 10,48,576 टा रो थाए एवं 16,384 टा कॉलम थाए एटा होची सबथर बड़ कथा एंड आमे सेल रे सब प्रति सेल रे डाटा ही एंट्री करू जोटा एक्टिव सेल थे सेटा गोटे इन द ब्लैक सेल आकार एक्टिव होय ताले हम जानु जे एटा होची एक्टिव सेल एंड अदर आर नोन एज द सेल्स तो एक्सेल रो एई भली जिंसोडा परे आमे कहिले किछि फंक्शंस फार्मूला लाइक दैट पाइवट टेबल सिनेरियो गोल सीक कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फिल्टर ए सब जिंसोडा को ऊपर भी हम उठके फोकसिंग करबा को पड़िबो ता ऊपर टिके जानिबा को भी पड़िबो एबे आमे जिबा एक्सेल रो किछि एमसीक्यू विषय डिस्कशन करबा पाए ताले देखिबा द क्वेश्चंस आर ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन गुडा को तम स्क्रीन रे वर्तमान आसीबो तो क्वेश्चन देखो
The questions are, here are the questions. The first question for you, you can use the formula palette. You can use the formula palette to. तमे formula palette को कहीं व्यवहार करिवो. Options are format cells containing numbers. Option B, create and edit formula containing functions. Enter assumptions data. Copy a range of cells. You can use the formula palette to. तमे formula palette को कहीं व्यवहार करो बा formula palette रो बेसिकली कहीं यूज करा जाए ताले formula palette रो कहीं हमें यूज करी थाउ को ऑप्शन दा राइट आंसर हबो यू कैन गिव द रेस्पॉन्स बाय सिंपली चैट तमे चैट करी आंसर देई परिबो मते हमें formula palette को कहीं व्यवहार करू एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स फॉर्मूला पैलेट को कहीं व्यवहार करा जाए फॉर्मेट सेल्स कंटेनिंग नंबर्स ऑप्शन बी क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन ऑप्शन सी एंटर assumptions डाटा एंड कॉपी ए रेंज ऑफ सेल्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस ताले हमरो जो पहले फॉर्मूला पैलेट थाए जोटा की कोड जगह थाए एग्जैक्टली हमरो जो नेम बॉक्स थाए नेम बॉक्स राइट हैंड साइड रे थाए सही जगह रे आमे फार्मूला को क्रिएशन भी करि परिबा माने कोनोसी सेल रे ओटे कैलकुलेशन करिवार अछि मैनुअली सेठी हमें लिखिले भी से सेल रे फार्मूला टा लिखि चलिबो बा पूर्वरु जदी कोनोसी ओटे फार्मूला में लिखि छे तार चेंज भी करि परिबा सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस केस दैट क्रिएट एंड एडिट फार्मूलाज यूजिंग आमे फार्मूला को क्रिएशन करि परिबा एंड एडिटिंग करि परिबा दिस आंसर इज द राइट आंसर क्रिएट एंड एडिट formulas using containing functions okay next question for you when a range is selected how can you active the previous cell when a cell is selected how can you active the previous cell जेतेबेले गोटे तमरो रेंज को सिलेक्शन करिछो माने अनेक गुडा सेल को तमे सिलेक्शन करिछो हाउ कैन यू एक्टिव द प्रीवियस सेल तमे प्रीवियस सेल को केमते एक्टिव करिवो ऑप्शन ए प्रेस द ऑल्ट की ऑप्शन बी प्रेस टैब ऑप्शन सी प्रेस एंटर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स केही रेस्पॉन्स दे परिवो जे आ भितर कोडा राइट आंसर हबो एस someone give the response as none of the above this one is the right answer तमे जदी कोनोसी गोटे सेल रेंज को एक्टिव करिचो ताहले प्रीवियस सेल को केमते एक्टिव करिवो किछि भी नुहा भितर ऑल्ट मारले तो किछि हबो नै ऑल्ट सहित मिसै कि किछि मारिले एटा गोटे स्पेशल की तो स्पेशल फंक्शन किछि हितो टैप तो मारिले प्रीवियस सेल को जिबार चांस न थाए से उल्टी आगु पळाए एंटर तो मारले तळु खसी आसीबो माने नेक्स्ट जो डाउन सेल को खसी आसीबो तेणु करी ऑप्शन डी होची राइट आंसर किछि भी न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द नेम बॉक्स ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार द नेम बॉक्स ऑन टू द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार ऑप्शन ए shows the name of the workbook currently working on shows the name of the worksheet currently working on option C shows the name of the cell or range currently working on and option D none of the above which option is the right answer नेम बॉक्स टा जहा की टॉप लेफ्ट फार्मूला बार रे देखा जाए तार भितरु एई जो कंडीशन मानक भितरु हमें नेले ए को कंडीशन ता ता पई मोर एप्लीकेबल बा या भितरु कोठा होचे ठीक आंसर एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स द नेम बॉक्स ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार जस्ट टिके आगु भी मु एक्सेल स्क्रीन टा भी डिस्प्ले भी करैथिली एंड तापर टिके बुझौ भी थिली एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स आ भितरु कोठा राइट आंसर हबो
The option, no, option B is the wrong answer. The right answer is option C. Option, the right answer is option C. समस्त क्वेश्चन को नोट डाउन भी करि परिबो. Option C is the right answer. Shows the name of the cell or a range currently working on. से जगह नेम बॉक्स रे हमको देखाए को सेल रे हमें काम करूचे बा को रेंज ऑफ सेल रे हमें काम करूचे. माने करो हम एमती सिलेक्शन कर देले जे A1 थारो आरंभ करी कि H20 पर्यंत पूरा देखै देउथबो. एठी हमें ए रेंज ता लेचे A1 into H20 एम देखै देउथबो. माने एठो ए पर्यंत डाटा रेंज ता हमें नेइचे. सो ऑप्शन सी shows the name of cell or a range বা cell range currently working on जहा को नहीं हमें किछि काम करूचे. So option C is the right answer. Okay, next question for you. Which of the following is not the correct method of editing the cell content? Which of the following is not the correct method of editing the cell content? एमानक भितरु कोटा ठीक मेथड नुह कोनसी सेल रो कंटेंट्स को एडिटिंग करिबा पई. Anyone can give the response? Option A, option B, option C या फिर option D. माजी तुमको अवश्य टिके टेक्निकली क्वेश्चन देइछि सेथि पई तो गोटे ऑप्शन कमे देइछि जहा पर तुमको बाछिया को सुविधा हबो बोली. तो आ भितरु कोटा राइट आंसर हबो. Which of the following is not correct method of editing the cell contents? एमानक भितरु कोटा से ठीक मेथड नुह जहा कि सेल कंटेंट्स गुडा को एडिटिंग पई यूज करा जाय नाही. Option A is the right answer. Yes, option A is the right answer. Press Alt key. Alt key ही हमरो करेक्ट मेथड नुह एडिटिंग करिबा पई. F2 तो मारले निश्चित भाबे सेल टा एक्टिव हुए एंड सेतरे काम हुए. क्लिक द फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार तो क्लिक करले निश्चित भाबे हमें किछि फॉर्मूला लिखि पारु. डबल क्लिक द सेल. सेल रे भी डबल क्लिक करले भी सेल रे काम करी हुए. सो ऑप्शन A is the right answer. Press the Alt key. This one is the right answer. Next question for you. You want to set such that when you type Boisak and drag the fill handle, Excel should produce Jeshta, Asada and so on. What will you set to effect that? Excel तो Microsoft company से तो हमरो ये ओडिया ना उडा को जानि नै. Boisak Jeshta Asada. By the way हमको गोटे मंदिर रे काम हमें करूचे. मंदिर रे जले काम हबो हमको किछि डाटा एंट्री करिबा को पड़िबो. ओडिया मास ना गुडा को हमको पूरा फीड करिया को पड़िबो. काइना बैशाख मास रे कोन हला एक्टिविटी उडा देखिया को पड़िबो. ए एतिके सब आस्ले जिंस एतिके गला जहा देखिया को पड़िबो. ज्येष्ठ मास रे कोन ट्रांजैक्शन. तो बाय द वे हमको इंडियन कल्चर माने एबे तो चलछि भी ओडिया रो सब ओडिया स्मित मेथड तो सब हमको एमती एंट्री करिया को पड़िबो. बाय द वे एटा नथिबो एक्सेल रे नाही तयारी कला बेले. तो मु कहिबा कथा जदी आमे चाहूचे एमती जेमती 1 2 3 4 लिखला को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट उडा पड़ी जाउची कि जनवरी लिखि कि पके देला को टाणी देला को फेब्रुआरी मार्च पड़ी जाउची कि संडे लिखि टाणी देला को हमरो मंडे वेडनेसडे पड़ी जाउची. तो ठीक सेमती मो बैसाख लिखि टाणी देला को ऑटोमेटिकली ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण एटा पड़ी जिवो. तो बाय द वे सेटा करिवि केमती एक्सेल रे हुए केमती? एनीवन कैन गिव द रिस्पांस? समवन गिव द रिस्पांस आज B. But B is the wrong answer and the right answer is custom list. Option A is the right answer. Custom list. मु जोटा हाइलाइटिंग कली that is the right answer. अच्छा ठीक अछि. तो कस्टम लिस्ट ता काहे के राइट आंसर हबो मु तुमको भी एटा बुझेई दउची. तमरो ई जो कस्टम लिस्ट को तमे जनरली पाइबो कोठो? ए जो कस्टम लिस्ट तमे कहूचो जनरली कस्टम लिस्ट मिले कोठी? तमे जानिथिबो जे एक्सेल रो गोटे फाइल टैब थाए. से फाइल टैब भितरे तमरो गोटे अछि बाय द वे गोटे ऑप्शन अछि से जगह रे सेटा कोहंती हमरो सेटा कोहंती फाइल रो ऑप्शन. ठीक कथा फाइल रो ऑप्शन अछि. ऑप्शन भितरे गोटे ऑप्शन अछि मोर कोन कहिला एडवांस्ड. से एडवांस भितरे अछि गोटे जनरल. देखिबो केबे ऑपरेशन करी की तो जनरल भितरे हां जनरल भितरे मते कोन करिबा को पड़िबो ना जनरल भितरे मते जाई की सेठी एडिट कस्टम लिस्ट को जिबा को पड़िबो एंड एडिट कस्टम लिस्ट को जाई की न्यू लिस्ट जनरेट करिया को पड़िबो. माने मु जहा चाहू छी तमे लिखियो जे ड्रैग कले फास्ट ऑटो फिल ऑप्शन आसीबो जे बट बैसाख ज्येष्ठटा नथिबो. बैसाख ज्येष्ठ हबो नै जमा. हमकु सेटा को बाय द वे जनरेट करिया को पड़िबो तयारी करिबा को पड़िबो.
ताले कस्टम लिस्ट रे सेटा हबो कस्टम लिस्ट जनरली हमर जोटा फाइल टैब कहउछो से फाइल टैब अंडर गोटे ऑप्शन अछि ऑप्शन रे क्लिक कले हमको जिबाउ पड़िबो एडवांस को से एडवांस भितरे हमर गोटे अछि जनरल से जनरल भितरे अछि एडिट कस्टम लिस्ट को जाके न्यू लिस्ट जनरेट करिवो न्यू लिस्ट भितरे सेठी तमे मैनुअली एंटर करिवो एमती मुझे पकेबी सेमती आसीबो बैशाख कमा ज्येष्ठ कमा आषाढ़ सीट पके दे ओके मार दो नेक्स्ट टाइम तुम जिते तुम वर्कशीट डाटा एंट्री करिवो ऑटोमेटिकली बैशाख लिखि टाणी देला बेलकू ज्येष्ठ आषाढ़ पळे आसीबो किंतु बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सेटा तयारी करि न थाए आमे सेटाको कस्टम लिस्ट रे जनरेट करू सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू Excel happens when you press Ctrl plus X after selecting some cells in Excel. What happens when you press Ctrl plus X after selecting some cells in Excel? Option 1. The cell content of selected cells disappear from the cell and stored in clipboard. Option B. The cells selected are marked for cutting. Option C. The selected cells are deleted and the cells are shifted to left. The selected cells that are deleted and cells are shifted up. Which option is the right answer? आमे जेतेबेले कोन घटिबो जदी कंट्रोल सहित एक्स आमे प्रेस करूचे बाय द वे एक्सेल रे हमर कोन घटिबो ए ऑप्शन मानक भितरु someone give the response as option B. I think option B टा ठीक अछि the cells selected are marked for cutting जेमती कटिंग कला बेले आमे जो कोनसे गोटे पैक आसे देखुचे डॉट 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 पडिथिबो गोटे लास्ट को सीजर्स चिन्ह देइथिबो तो सेल गुडा के मध्ये सेही बळे ही देखा जिवो सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी दिस वन इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू क्वेश्चन नंबर 7 which of the following option is not available in paste special dialog box आमे जानिचे वर्ड रे भी हमर पेस्ट स्पेशल अछि तो आज दैट एक्सेल रे मध्ये हमर पेस्ट स्पेशल अछि ताले से कहिबा कथा एई मानको भितरु को ऑप्शन टा से पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स भितरे न थाए बाय द वे आमे भाबु कंप्यूटर टा बहुत सहज जिंस कंप्यूटर एते सहज जिंस नुहे एंड प्रत्येक तम एग्जाम रे से जो कहंती पूरा सेटा को फेंटा फेंटी करी ता भितरु एमिति क्वेश्चन जनरेट करंती आमे जदी सेही वे रे प्रिपेयर न हितिबा क्वेश्चन गुडा को सॉल्व करि परिबा नाही सो टुडेस क्लास इज वेरी इंपोर्टेंट एंड टुडेस क्लास इज वेरी टेक्निकल क्लास अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल which of the following option is not available in paste special dialog box हमें समस्त पेस्ट स्पेशल व्यवहार करिचे ताहले एमानक भितरु को ऑप्शन टा पेस्ट स्पेशल भितर न थाए एस तो राइट आंसर इज योर व्हाट द राइट आंसर इज एसक्यूआरटी दिस वन हमरो देखिबो ऐड अछि ता भितरे सबट्रैक्ट अछि ता भितरे डिवाइड भी अछि ता भितरे बाय द वे एसक्यूआरटी ऑप्शन किछि न थाए एसक्यूआरटी टा जोडे फंक्शन से गोटे एक्स्ट्रा थाए हमरो कोठी फंक्शन लिस्ट भितरे सेटा थिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा व्हिच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो एमानको भितरु को ऑप्शन टा को हमें चूज डाटा रो को कन्वर्ट होई परिबो एनीवन कैन गिव द रिस्पांस anyone can give the response अच्छा 6 नंबर आंसर तो मैं ऑलरेडी कहि देली ऑप्शन बी टा होची राइट आंसर बोली तो ऑप्शन बी टा एंड 7 रो क्वेश्चन रो बे मु ऑलरेडी आंसर कहि सल्लानी एसक्यूआरटी बोली होची राइट आंसर एंड जिबा एबे 8 नंबर को व्हिच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो एमान को भितरु कोटा कॉलम रो डाटा को रो को कन्वर्ट करिया पई यूज करा जाय anyone can give the response so option B is the right answer paste special and transpose paste special भितर को गले ता भितर गोटे ट्रांसपोज ऑप्शन अछि से ट्रांसपोज ऑप्शन रे ही हमरो ए जो रो रो डाटा को तमे कॉलम रो डाटा को रो को कन्वर्ट कर दी परिबो कॉलम रे किछि डाटा एंट्री करछो ना ताको रो को कन्वर्ट कर परिबो माने से कॉलम डाटा को रो रे अरेंजमेंट हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू it is acceptable to let long text flow into adjacent cells on the worksheet when
अच्छा एठी तुमको जस्ट टिके मते कहि देबा को पड़िबो ए जो अर्जेंट सेल माने कोन बा ए जो अर्जेंट सेल कहिला हमें कोन बुझुछु केही अर्जेंट सेल ऊपर किछि धारणा रखिछो कि तो अर्जेंट सेल कहले जनरली हमें कोन कहू अर्जेंट सेल माने हमर जेतेबेले कोनोसी जिंसर सेल रो हमें किछि कांटेक्ट करबा ईच अदर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और साइड टू साइड ता भीतर किछि कंपैरिजन नै परिबा एंड इजीली कैन सिलेक्ट ड्रैगिंग ए सब जिंसोडा का हे पारे तो एटा कहंती अर्जेंट सेल ताले हमें ए जो अर्जेंट सेल रो इमान को भितर कोटा होच एक्सेप्टेबल वर्कशीट रे ऑप्शन ए डाटा विल बी एंटर्ड इन द अर्जेंट सेल्स no data will be entered in the urgent cells there is no suitable abbreviation for the text there is no time to format the text anyone can give the response urgent cell pai eman ko bhituru ko rule ta hochi ठीक बा एमान को भितर को रूल टा होची परफेक्ट anyone can give the response क्वेश्चन नंबर 9 अर्जेंट सेल पाई ऑप्शन बी होची राइट आंसर नो डाटा विल बी एंटर्ड इन द अर्जेंट सेल ताले अर्जेंट सेल रे जे कहिची ऑप्शन बी दैट इज द राइट आंसर अदर देन जहां भी जे आउ कहिची सेटा रॉन्ग होबो ऑप्शन बी टा होची ठीक आंसर नो डाटा विल बी एंटर्ड इन द अर्जेंट सेल रे तमे कोनोसी डाटा एंट्री करि परिबो नाही अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which of the cell pointer indicates you that you can make selection एमान को भितरु को सेल पॉइंटर टा इंडिकेट करे जे तमे किछि सिलेक्शन करिचो मो कहितली ना आज रे क्लास टा होची बहुत इंपोर्टेंट एंड दिस इज बेस्ड ऑन द सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काइना एग्जाम रे सब बेले जे थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आसीबो एंती माने नाही आज जो क्वेश्चन गुडा को डिजाइनिंग करा जायछि स्पेशली प्रैक्टिकल बेस यदि जने प्रैक्टिकल सेति एफिशिएंट वर्क करथिबो आंसर गुडा को आराम से दे दे परिबो व्हिच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स यू दैट यू कैन मेक सिलेक्शन एमान को तो को सेल पॉइंटर टा इंडिकेट करे जे तमे किछि सिलेक्शन करिछो ऑप्शन ए डॉक्टर से सिंबल बिग प्लस ऑप्शन बी स्मॉल थिन प्लस आइकन ऑप्शन सी माउस पॉइंटर विथ द एंकर एट द टिप नॉन ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 10 What is the right answer? Question number 10 रो right answer कोठा हबो जदि हमें किसी सिलेक्शन करिचे ताहले ऑप्शन ए टा ही राइट आंसर द ऑप्शन ए दिस वन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन डॉक्टर्स सिंबल बा जोटा को बिग प्लस साइन बोली कहू हमें देखिथिबा जेतले एक्सेल को हमें ओपन करिथिबा सेतले देखिबा बेले बेले कला सा गोटे युक्त चिन्ह भलिया से एटा ही जे माउस पॉइंटर बेले बेले धଳାର ଗୋଟେ ମୋଟା ହେଇକି ହୋଇଥାଏ ତାଲେ ସେ ଧଳାର ମୋଟା ହେଇକି ହେଇଥାଏ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ଡକ୍ଟର୍ସ ସିମ୍ବଲ ବା ତାକୁ ବିଗ ପ୍ଲସ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଲେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରୁ ସେଟା ବିଗ ପ୍ଲସ ଭଳିଆ ହିଁ ଥାଏ ଏଇଠୁ ତ ମତେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମୋଟା ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ସେ ଧଳା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल सीरीज एमान को भितर को सेल पॉइंटर टा इंडिकेट करे जे हमें फिल सीरीज करबा को जाउछो डॉक्टर से सिंबल बिग प्लस ऑप्शन बी स्मॉल थिन प्लस आइकन माउस पॉइंटर विथ एंकर एट a tip and none of the above anyone can give the response question number 11 the time is very short proceeding kariba शीघ्र शीघ्र टिके which of the cell pointer indicates that you can fill series एमान को भितर को सेल पॉइंटर टा इंडिकेट करे जे हमें फिल सीरीज करबा को जाउचे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर स्मॉल थिन प्लस आइकन जेतेबेले हमें ऑटोफिल माने जेमति कहउतली 1 2 लिखि देबा ताको टाणीबा को हेले तो नो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर से क्वेश्चन पाई ऑप्शन ए थिला राइट आंसर सिलेक्शन बोले बट फिल सीरीज हमें करबा को जाउचे सीरियली फिल 1 2 3 4 ए टाइप रो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एस ऑप्शन स्मॉल थिन प्लस आइकन दिस वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू you can auto fit the width of a column by you can auto fit the width of a column by option A double clicking on the column name on the column header option B double click on the cell pointer in the worksheet double clicking the column right border on column header double clicking the column left border of the column header which option is the right answer
you can auto fit the width of column मु जस्ट टिके तो मु कहि दोछि सेल रे मने कर मु गोटे ना लिखिछि से नाटा पूरा सेल को फिल अप करि पारु नाही बाय द वे कॉलम रे भी फिल अप हो नाही तो मु चाहूछि जे से ना जेति की बड़ अछि सेति के अनुसार सेल टा फिट हेकी रहिबो सॉरी कॉलम टा फिट हेकी रहिबो ताले मते आ भीतर को एक्टिविटी टा परफॉर्म करिया को पड़िबो anyone can give the response which option is the right answer option A option B option C या फिर option D someone give the response as option B wrong answer option C is the right answer this one is the right answer double clicking the column right border on the column header जो column रो width को तमे adjustment करिया चाहूतिबो तार column heading को पूरा पळेबो माने B column रो मते adjustment करिवार अछि ताल B column पाखु पूरा heading को पळेबो तार जो right border थी double click मार दबो तो double click मार देले हेटा हे जिवो double clicking on the column right border on the column header so option C is the right answer okay next question for you paste special allows some operation while you paste to the new cell which of the following operation is valid paste special तमे जतबे करूचो सेतबे किछ ऑपरेशन करिया पई से कहे न्यू सेल रे पेस्ट करिया पई ताले आमी जानि छ ना पेस्ट स्पेशल इज दैट एक्टिव clipboard content that can be कोन ऑपरेट सम स्पेशल ऑपरेशंस स्पेशल ऑप्शंस तो सेथि पई आमे एमान को भितर कोटा वैलिड स्क्वायर परसेंटेज गोल सीक एंड डिवाइड कोटा भितर सेटा एक्टिविटी टा करी हुए anyone can give the response option C that is wrong answer option D is the right answer so option D is the right answer तो आमे जते बेले पेस्ट स्पेशल को जाउचे ये एक्टिविटी किछि भी करी हो नाही केवल डिवाइड ता भितरे थिबो option D is the right answer okay okay next question for you वर्तमान तमे आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को which of the following is not true about the find and replace in excel एमान को भितरु कोटा find और replace पाई कि प्रयोज्य नुह एमान को भितरु कोटा find और replace पाई नुह option A you can search for bold and replace with italic you can decide whether to look for the whole word or not you can search in formula 2 you can search by rows or columns or sheets which option is the appropriate answer for this question a question पाई कोटा होचे right answer anyone can give the response option D is the right answer this one is the right answer आमे जेतेबेले कोनोसी गोटे वर्कशीट रे काम करूथिबा find replace रो यूज करिबा को चाहूथिबा this one is the appropriate answer you can sort by rows or columns or sheets हमें पूरा पूरी वर्कशीट रो कोनोसी जिंस को खोजि कि रिप्लेसमेंट कर दे परिबो कोनोसी गोटे रो रे भी करि परिबो कोनोसी गोटे कॉलम रे भी करि परिबो सो दिस वन इज आउ किछि भी नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कैन यू सेट 0.5 इंच लेफ्ट इंडेंशन फॉर ए सेल इन एक्सेल तमे एक्सेल रे 0.5 इंडेंशन दे परिबो कि इंडेंशन माने मु जोटा कहूची जे मार्जिन जोट थाए एंड स्टार्टिंग ऑफ द कंटेंट्स जोट लेखाटा आरंभ होय सेही जो स्पेस टा कहंदी इंडेंट ताहले तमे सेटा सेट करि परिबो कि इंडेंशन ता गोटे सेल रे ऑप्शन ए एक्सेल डज नॉट हैव द इंडेंशन फीचर ऑप्शन बी यू कैन स्पेसिफाई इंडेंशन ओनली इफ यू टर्न ऑन द रूलर्स ऑन इंडेंशन कैन बी सेट फ्रॉम द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स द इंडेंशन कैन बी स्पेसिफाइड ओनली व्हेन प्रिंटिंग व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर एक्सेल रो हमें कोनोसी सेल रे जतले एंट्री करिबा से जो कंटेंट्स ता सेल रो बॉर्डर्स पाखरु इंडेंशन नै कि रही पारिबो कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी एटा भितरु कोटा मोर राइट आंसर एनीवन कैन गिव द रिस्पांस ऑप्शन डी दैट इज रॉन्ग आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इंडेंशन कैन बी सेट फ्रॉम द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल रो डायलॉग बॉक्स को गला परे सेठी हमरो इंडेंशन सेटिंग करिया पे भी व्यवस्था अछि ऑप्शन नो रूलर नो रूलर तो एक्सेल रे रूलर नहीं वर्ड भी रूलर अछि एक्सेल रे नहीं तो बाय द वे इंडेंशन कैन बी सेट फ्रॉम द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स जो फॉर्मेट सेल्स रो डायलॉग बॉक्स अछि सेठी गोटे नंबर अछि गोटे फॉन्ट अछि गोटे अलाइनमेंट अछि
गोटे प्रोटेक्शन अच्छी तो एमती डिफरेंट टैब गुड़ाक अच्छी तार भितर गोटे अच्छी से जगह जाकि इंडेंशन को आम सेटिंग कर सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू क्वेश्चन नंबर 16 you can automatically adjust the size of text in a cell if they do not fit in width by you can automatically adjust the size of text in a cell if they do not fit width by आमे कोटे सेल रे कंटेंट्स को एडजस्टमेंट करिबा जदि बाय चांस से कंटेंट्स ता फिट हो नाही ताहले केमिति हबो डबल क्लिक ऑन द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम हेडर फ्रॉम द फॉर्मेट choose columns and then auto feed selection from format cells dialog box mark shrink to the feed the checkbox and all of the above anyone can give the response today's तुमको again and again कहूची today's class is a very important today's class is a practical based class and all the questions are very important and the questions come in this format in the various exams ei format रे various exams आसे बहुत सिंपल जिंस हमें बाबू बाय द वे सेटा सॉल्व करी हुए ना ओके आ भितर कोटा होची राइट आंसर हबो यू कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ टेक्स्ट इन ए सेल इफ दे डोंट फिट इन द विड्थ बाय कॉलम रो विड्थ अनुसार जदी फिट न होथाय ताले आ भितर को जिंसडा हम एप्लीकेबल करि परिबा गिव द रेस्पोंस एज बी आई थिंक दैट इज रॉन्ग आंसर बी नुहे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आमे जदी सेटा करिबा को चाहूतिबा ताहले हमको एठेकू एई जिंसडा करिवा को पड़िबो फ्रॉम द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स मार्क श्रिंक टू फिट चेक बॉक्स ताले श्रिंक ता पुनी कोड था सेडा जानिया को पड़िबा हमको तो ता भीतर जो डिफरेंट टैब कहली मु फॉर्मेट सेल्स तमे कंट्रोल सहित 1 मारी कि एक्टिव करि परिबो बा होम टैब रो हमर जोटा अछि सेल्स भीतर फॉर्मेट अछि फॉर्मेट भीतर राइट क्लिक कर देबी फॉर्मेट सेल्स आसीबो से फॉर्मेट सेल्स रो सेकंड टैब ता होछि हमर अलाइनमेंट से अलाइनमेंट भीतर डिफरेंट ऑप्शन थाए मोर सेल्स थाए तापर ऑटो फिट थाए सेठी गोटे थाए श्रिंक टू फिट से श्रिंक टू फिट मारी दबो तमे जेडा बडा लेखाटा भी हेले से अनुसार छोटो मोटा जहां भी करी की ताको गोटिए धाडी भीतर फिट फाट करी की से भीतर सेट कर दबो तो सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू फॉर्मेटिंग ए सेल इन नंबर फॉर्मेट यू कैन नॉट सेट फॉर्मेटिंग ए सेल इन नंबर फॉर्मेट you cannot set option A decimal places option B use 1000 separator option C negative numbers option D currency symbol formatting a cell in number format you cannot set anyone can give the response formatting a cell in number format you can set ताले formatting cell पाई एमानको भितरु कोटा नुह Option B, wrong answer. Option D is the right answer. Currency symbol. कहीं ना नंबर माने जनरली नंबर नबो एठी आ सब करी हबो डेसिमल प्लेसेस तमे देई परिबो हां बाय द वे डेसिमल प्लेसेस देई परिबो 100 सेपरेटर भी देई परिबो जेमति लेखंती 5,000 तो सेमति देई परिबो सेपरेटर देई परिबो नेगेटिव नंबर्स भी नहीं परिबो माइनस एतिकी किंतु करेंसी सिंबल आसीबो नाही से डॉलर सिंबल हो कि रुपी सिंबल हो सेउडा का आसीबो नाही so option D is the right answer next question for you what is entered by the functions equal to today what is entered by the function equal to today जो function रो सेटा कोन पाई यूज करा जाय बा कोन एंटर करी हुए the data value for the day according to the system clock the time value according to the system clock today's date as text format all of the above anyone can give the response what is entered by the function equal today को नहीं हमें आ भीतर को एक्टिविटी टा परफॉर्म करू anyone can give the response you give the response as option D wrong answer option D be no this is the date value for the day according to the system clock system रे जो डेटा सेटिंग हेतिबो जो तारीखटा सेटिंग हेतिबो सेटा ही आसीबो the date value for the day according to the system clock system जो हमें डेट एंड टाइम इंडिकेटर देखुछे ना से डेट एंड टाइम इंडिकेटर जो डेट और टाइम शो करथिबो
स्पेसिफिकली सेही डेट टा जहा देखौतिबो सेही डेट टा देखिबो सिस्टम डेट टा तो सेटा होची इक्वल टू टुडे तो नेक्स्ट जिबा हमें which function will you use to enter current time in a worksheet cell which function will you use to enter current time in a worksheet cell गोटे वर्कशीट सेल रे करंट टाइम आने पहले को फंक्शन को यूज करा जाए ऑप्शन ए इक्वल टू टुडे ऑप्शन बी इक्वल टू नाउ ऑप्शन सी इक्वल टू टाइम ऑप्शन डी इक्वल टू करंट टाइम एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 19 कोटा हबो राइट आंसर एमान को भितरु anyone can give the response which function will you use to enter current time in a worksheet गोटे वर्कशीट रे करंट टाइम दबा पई हेले हमें मान को भितरु कोटा यूज करिबा हां मु जानिछली ऑप्शन डी ही तमे समस्त रेस्पॉन्स दबो बट ऑप्शन डी किछि सेमती नाही एक्सेल रे फंक्शन किछि नाही दिस थिंग इज द राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इक्वल टू नाउ मु कहितली प्रत्येक फंक्शन बा फार्मूला एक्सेल रे समान चिन्ह रे आरंभ होबे ताले तुमे डेट एंड टाइम भितर को पळेबो सेठी इक्वल टू नाउ गोटे फंक्शन अछि मार दबो ताले जोटा सिस्टम टाइम ही थिवो से करंट टाइम ता शो करिवो डेट एंड टाइम शो करिवो ठीक डेट एंड टाइम शो करिवो तो इक्वल टू नाउ फंक्शन रो हमें यूज करी एग्जैक्टली टाइम को हमें जानि परिबा आउ किछि नो करंट टाइम नो इक्वल टू टुडे नो इटा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू when all the numbers between 0 and 100 in a range should be displayed in a red color apply होय जेतबे गोटे नंबर ता 0 रु 100 भितरे सब किछि हमरो रेड कलर रे डिस्प्ले हबो ताले कोन हमें अप्लाई करिबा यूज इक्वल टू इफ फंक्शन टू फॉर्मेट द रिक्वायर्ड नंबर्स रेड apply conditional formatting command select the cells that contain numbers between 0 and 100 then click on the red color on text color tool and all of the above anyone can give the response जदि आमे 0 रु 100 भीतर हमर अनेक गुळे नंबर एंट्री हिची बाय द वे मते ता भितरु 0 रु 100 भीतर सबुतिक थिबा नंबर गुडा को रेड कलर रे देखिबार अछि ताहाले मते एमानक भितरु को फंक्शन को यूज करिबा को पड़िबो anyone can give the response यही response दे परिबो someone give the response as a C wrong answer मु काहे रेड कलर मु जदी रेड कलर मारिबी ताले जदी मते लक्ष्य डाटा थिबो मु एमति को खोजी खोजी ए कामटा करिवि कि नो दैट इज नॉट द appropriate process the appropriate process is this one apply the conditional formatting मु एठी conditional formatting रे से कंडीशन को एमिति पके देबी जहा फल रे कि से कोन कर देबो 0 रु 100 भीतर थिबा संख्या गुडा को ऑटोमेटिकली रेड कलर कर देबो सीडी अछि माने द नंबर्स बिटवीन 0 रु 100 मु पके देबी एंड सब गुडा को हिजिबो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर जदी मैनुअली करा जाय नाही एक्सेल रे सेतबे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रो पुट करा जाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पई इमानको भितरु एटा कोटा ट्रू नुह you can add more one conditions to check you can set condition to look for the bold and apply the italics on them you can apply font border pattern formats that meet the specified conditions you can delete any conditions from the conditional formatting dialog box if it is not required anyone can give the response emanako bitur ko option ta ठीक habo you give the response as option B no that is not option B you think that this is option B which of the following is not true regarding the conditional formatting yes option B is the right answer हमें जदि बोल्ड करिबा सेटा इटैलिक केमथि होबो बोल्ड मान तो बोल्ड ही होबो ना तो ऑप्शन B is the right answer okay next question for you which of the following is invalid statement एमानको भितरु एटा कोटा valid statement नुहो sheet tabs can be colored some picture can be applied as a background of the sheet you can set the column width automatically fit the amount of the text the width of the row and be specified manually or fit automatically एमानको भितरु कोटा
इनभैलिड स्टेटमेंट बा एमानको भितरु को स्टेटमेंटा प्रযোज्य नुह ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स एमानको भितरु को स्टेटमेंटा युक्तियुक्त नुह you can give response option D is the right answer this one is the right answer the width of a row and be specified manually or fit automatically एटा होची गोटे इनवैलिड स्टेटमेंट आउ सब ही परिबो सीट टैब को आमे कलर करि परिबा जो सीट 1 सीट 2 सीट 3 लिखाइ त सीट टैब रे ताको आमे रंग भरि देई परिबा some pictures can be applied at the background of the sheet आमे सीट रो भी पछ पाखरे गोटे अलगा पिक्चर भी सेटिंग कर दे परिबा you can set column width automatically fit the amount of text कोथि जस्ट किया गुरु आमे आमा डाटा एंट्री कला सब मन मन फिट कर दोथो किंतु the width of a row and can be specified manually or fit automatically एटा हबो नाही मानुअली केमथि हबो हमकु सेटा टानिया को पड़िबो ना बाय द वे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सो ऑप्शन डी एटा होची इनवैलिड स्टेटमेंट आ सब तो वैलिड okay next question for you jiba excel is a good application for what if analysis which of the following tool help you for this excel टा होची गोटे application जहा कि what if analysis पई यूज करा जाय ताहाले एमानको भितरु को टूल टा एथि पई हेल्प करे ऑप्शन ए फॉर्मूला ऑडिटिंग ऑप्शन बी डाटा वैलिडेशन ऑप्शन सी ट्रैक चेंज एंड ऑप्शन डी गोल सीक एनीवन कैन गिव द रिस्पांस Which option is the right answer? Excel is a good application for what if analysis. Which of the following tool help you for this? Excel is a good application and emanako bitaru ko tool ta ethi pai help kare. Anyone can give the response? The right answer is not option B. The D is the right answer. What if analysis pai emanako bitaru suitable tool ta hochi what if analysis. सॉरी व्हाट इफ एनालिसिस पई गोल सिक ताले गोल सिक भी हमर जेमदि थाए तारि भितरे बहुत तक जिंस तक थाए ताले व्हाट इफ एनालिसिस भितरे गोल सिक ही थाए सो दिस क्वेश्चन आंसर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू अप्लाई गोल सिक कमांड योर सेल पॉइंटर मस्ट बी इन हमर गोल सिक कमांड को अप्लाई करबा कोले तमर सेल पॉइंटर ता को जगह थिबा दरकार द चेंजिंग सेल हुज वैल्यू वी नीड टू फाइंड ऑप्शन बी द रिजल्ट सेल where formula is entered, the cell where your targeted value is entered, none of the above. Anyone can give the response? To apply goal seek command, your cell pointer must be in. Goal seek को apply करिबा कोले तमर cell pointer कोठी थिबा दरकार. Anyone can give the response? Option A, option B, option C या फिर option D. कोटा भितर right answer हबो? Option B is the right answer. This one is the right answer. The result cell where formula is entered. ताले कष्टटा मते सेट रहिबा दरकार काहेकि ना जो गोल सीक रो डायलॉग बॉक्स से तीनटा जिंस पाउ गोटेला सेट सेल गोटेला टू वैल्यू आ गोटेला बाय चेंजिंग सेल सेट सेल बॉक्स रे मते दबाउ पड़िबो सेही सेल रो रेफरेंस जो सेल रे हमर फार्मूलाटा कैलकुलेशन हेतिबो एंड टू वैल्यू बॉक्स रे मते दबाउ पड़िबो मु से रिजल्ट को चेंजिंग करी केते करिबा को चाहूची एंड लास्ट जो रहिला बाय चेंजिंग सेल को सेल रो वैल्यू टाको एडजस्टमेंट करिया चाहूची बाय द वे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द रिजल्ट सेल वेयर फार्मूला इज एंटर सेटा निहाती भाबे एक्टिव रहिबा दरकार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्हाट इफ एनालिसिस टूल इन एक्सेल एक्सेल रो व्हाट इफ एनालिसिस रे एमानको भितर कोउटा न थाए ऑप्शन ए गोल सीक ऑप्शन बी सिनेरियो ऑप्शन सी कंसोलिडेट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव anyone can give the response you give the response as option B wrong answer the right answer is consolidate कारण व्हाट इफ एनालिसिस भितर तीनटा जिंस थाए गोटे डाटा टेबल थाए गोल सीक भी थाए सिनेरियो भी थाए तो नॉन ऑफ दिस तो हबो नाही तो बाय द वे कंसोलिडेट टा गोटे एक्स्ट्रा थाए सेटा व्हाट इफ एनालिसिस भितर न थाए तमे देखिवो डाटा टैब भितर अछि व्हाट इफ एनालिसिस सो व्हाट इफ एनालिसिस भितर गोल सीक थिबो सिनेरियो थिबो एंड तमरो एटा बाय द वे ऑप्शन सी इज द कंसोलिडेट कंसोलिडेट एक्स्ट्रा थाए सिनेरियो ता भितर थाए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू
A worksheet can be renamed with how many characters? गोटे वर्कशीट टाको आमे ना चेंज करि परिबा केतेटा अक्षर रे मैक्सिमम गोटे वर्कशीट रो ना दबा कोले केतेटा अक्षर आमे यूज करि परिबा ऑप्शन ए 30 ऑप्शन बी 31 ऑप्शन सी 32 एंड ऑप्शन डी 33 anyone can give the response ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आमे गोटे वर्कशीट रो ना चेंज करिबा कोले गोटे वर्कशीट रो नाम दबा कोले आमे मैक्सिमम 31 टा लेटर रो यूज करि परिबा ताठो अधिक हि परिबो नाही when you enter Sunday and fill right Excel fill it with Monday Tuesday and so on from where Excel knows that fill next से जो next ता से fill up करूची Excel को जगह सेटा जानि थाए anyone can give the response option C is the right answer what is the keyboard shortcut button for creating charts in selected cells हमें charts creation करिया पहले कोठा होची shortcut की anyone can give the response आमे एक्सेल रे चार्ट क्रिएशन करिबा कोले बा चार्ट तयारी करिबा कोले एमान को भितर को शॉर्टकट कीटा यूज करिबा ऑप्शन ए F3 ऑप्शन बी F5 ऑप्शन सी F7 एंड ऑप्शन डी होची F11 चार्ट क्रिएशन करिबा कोले आमे कोटा यूज करिबा you give the response as option B wrong answer option D is the right answer F11 को आमे यूज करिबा F11 द्वारा हमर कोन हबो चार्ट रो डायलॉग बॉक्स ता में ओपन करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज एन एक्सप्रेशन दैट टेल्स हाउ द नंबर्स इन ए डिटरमाइंड सेट ऑफ सेल्स आर टू बी कैलकुलेटेड व्हाट इज एन एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन दा कोन जहा कि डिटरमाइन करे सेल टू बी कैलकुलेटेड ऑप्शन नॉट F5 दैट इज F11 तो ऑप्शन ए फार्मूला ऑप्शन बी फील्ड ऑप्शन सी डाटा एंड ऑप्शन डी क्वेरी एमान को भितर कोटा व्यवहार करा जाय what is an expression that tell how the numbers is determined set of cells are to be calculated anyone can give the response option A is the right answer सेटा को exactly आमे कोन बोली कहू the formula बोली कहू so option A is the right answer and last question for you quarter 1 quarter 2 quarter 3 is an example of जदि एई बोली किछि जिंस थाए ताकू सेटा कहार एग्जांपल बोली धरि निया जे बा एटा कहार एग्जांपल क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 इज एन एग्जांपल ऑफ ए जो एंड क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 आसीबो एटा कहार एग्जांपल बोली हमें कहि परिबा एनीवन कैन गिव द रिस्पांस ऑप्शन ए फार्मूला ऑप्शन बी फंक्शन ऑप्शन सी सीरीज एंड ऑप्शन डी इज सिंटैक्स anyone can give the response this one is the right answer is known as a series ताको गोटे series बोली कहंती गोटे serial से enter करी करी चलिबो so this is an example of a series so this class I think you must clear the topics about the Microsoft Excel some of the basic parts of the Microsoft Excel there are many more questions relating to Microsoft Excel that is very very important and on the next class onwards we will cover that topics thank you for can please share the PDF of the today's context yes surely it is sharing kora jibo okay thank you for joining this class and we may discuss next interesting topics on the next class onwards thank you all for joining this class